welcome, welcome back to Med BioBuzz. So today we'll be doing your entire nervous system, which only includes your 5-6 important topics of microbiology second year. So first topic is your bacterial meningitis. So acute bacterial meningitis, that is acute bacterial meningitis, is basically an infection of the leptomeninges, that is namely life-threatening in condition involving infection of leptomeninges, that is your arachnoid matter and pia matter, as well as your surrounding subarachnoid space, surrounding brain and spinal cord, involving your subarachnoid space. Pathogenesis, that is transmission occurs via your droplet infection, direct contact, respiratory secretion, that is nasopharyngeal carriers, okay, close contact with infected people. Now roots. So roots is your that is three roots are there. That is firstly your hematogenous spread via your choroid plexus, that is directly to your brain and spinal cord. That is your subarachnoid space directly through your choroid plexus or blood vessel to the brain to subarachnoid space. Then there is your direct spread from your infection, that is otitis media, sinusitis, mastoiditis, and which is close to the meninges. And then there is your anatomical defect of central nervous system, such as your any kind of trauma, surgery, congenital defect. Then predisposing factors, age. It will occur more in neonates. Why? Because their immune system is not well developed yet. Then that is vaccination. So if Haemophilus influenza B vaccination is given, then the chances would be less. Then factors promoting infection at the primary site, such as your respiratory infection and all. If someone already has, then they will promote infection. Then cerebrospinal fluid shunts, such as your Acinetobacter and Pseudomonas, they act as shunts for your and as well as your Staphylococcus. Now blood-brain barrier breach, that is loss of your capillary integrity and breach in blood-brain barrier. Okay, so now what are the clinical features? That is knuckle rigidity, your Kernig sign, Rudensky sign. So basically there will be your neck will be very rigid and flexion would be difficult. Then there is your Kernig sign, that is on your that is the hip would also, that is flexion of your hip and lower and Rudensky sign, that is simultaneous hip and knee flexion when your neck is flexed. Then we have our mainly lab diagnostics. So lab diagnostics of your bacterial meningitis, that is firstly specimen control and specimen collection and transport. So specimen collection, mainly your cerebrospinal fluid through your lumbar puncture, that is septic measures are taken, that is CSF cerebrospinal fluid is the ideal specimen collected through lumbar puncture, that is 3 bottles, cell count, biochemical analysis and bacteriological examination. So transport should not be refrigerated because meningococci die, but for molecular diagnostic refrigeration can take place, mainly incubation in your New York City medium and Thyer Martin medium. Has to be done, Thyer Martin and New York City medium for your transport media. Then nasopharyngeal pus, that is nasopharyngeal swab and pus scrapings can be done for meningococcal meningitis, and blood culture can be done by your automated method, that is BacT-Alert. Then your biochemical analysis, that is more than 10,000 neutrophils will be present, central fluid pressure will be more, protein will be more, glucose will be less, and 90 to 95% neutrophils. In CSF, more than 1,000 leukocytes will be there. There is now gram staining. There is gram staining. So what are the main causal agents? So in your
acute pyogenic meningitis. So first is your Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae would be lanceolate or flame-shaped gram-positive diplococci. Then Neisseria meningitidis, that is crescent or moon-shaped gram-negative diplococci. Then Haemophilus influenza, that is again gram-negative Coccobacilli. E. coli, again gram-negative, that is singly arranged. Then comes your Streptococcus agallicti and Listeria monocytogenes, which are both gram-positive, short bacilli and cocci and short bacilli, short chain cocci and short bacilli. Heat smear, that is at one spot in the slide, that is repeated. Repeated drops are added on the same spot over and over again when the viral load is less to increase the sensitivity. And then centrifugation is done. Direct antigen test, that is C polysaccharide antigen detection by latex agglutination test, and capsular antigen detection done by your latex agglutination test, that is latex beads which are coated with your monoclonal antibodies used for antigen detection. And your for your capsular antigens, therefore coated with anti-capsular antigen, and from urine, that is for C polysaccharide antigen from urine, that is by your ICT, immunochromatographic test. Then culture, that is enriched media, blood agar, and vein heart infusion, that is conventional blood culture, and automated, that is BACT alert, incubation at 37 degree in candle jar, identification by conventional method or Mandita free tech. Antimicrobial susceptibility test on Muller Hilton agar, that is MIC based. VTech disc diffusion, sensitivity, that is decreased if sensitivity if antimicrobial therapy is already started. Then biofilm fire assay. Okay, now your identification properties. So identification properties in your culture smear, that is first is Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, that is we saw in the gram stain that it is gram-positive diplococci, plain or lanceolate shaped. It gives us your alpha hemolytic colonies in blood agar, and it is oxygen sensitive. It ferments bile and ferments inulin and bile soluble. Then comes your Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis is your gram-negative diplococci, which is half moon or crescent shaped. It gives non-hemolytic colonies in blood agar, and it is catalase and oxidase positive, and ferments glucose, maltose, but not sucrose. Ferments glucose, maltose, not sucrose. Then Streptococcus agallictiae, gram-negative, that is Coccobacilli, gram-negative cocci basically, and it gives your beta hemolytic colonies in blood agar, and it is CAMP positive, resistant to bacitracin. CAMP positive and resistant to bacitracin. Listeria monocytogene, it is also gram-negative, short bacilli, and beta hemolytic colonies in blood agar show stumbling type of mortality or differential mortality. Tumbling type of mortality or differential mortality. E. coli and Klebsiella, that is E. coli, again your gram-negative bacilli, that is lactose fermenting colonies in Meconium agar. E. coli gives lactose fermenting colonies in Meconium agar. Pseudomonas and Acinetobacter oxidase positive, oxidase negative. And Klebsiella, E. coli, Klebsiella both give your lactose fermenting colonies in blood agar. Then tetanus pathogenesis, that is your caused by Clostridium tetani, which basically produces two toxins, that is tetanospasmin and tetanolysin. The tetanolysin is your has no pathogenic property, whereas tetanospasmin is basically responsible for your spastic paralysis. So tetanospasmin, that is it has for a neurologic neurotoxin for manifestation, responsible for manifestation, utilized by antitoxin, therefore toxoided by adding formaldehyde, and used in vaccine. What is the mechanism of action of your tetanus toxin? That is your glycine and GABA receptor. Basically क्या करता है, binds to receptors which are present on your motor nerve terminal. जो motor nerve terminal होता है उस पर ये जाके receptors को bind करता है, and results in toxin internalization. Binds to your receptors which are present in motor nerve terminals. Binds to receptors present in
binds to receptors which are present in your motor nerve terminals and basically inhibits the release of glycine and GABA. So because of that spastic, because the presynaptic release of glycine and GABA is inhibited, it leads to spastic muscle contraction. इसका ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता. ट्रांसमिशन इज वाया योर इंजरी, रोड साइड इंजरी में, देन एसेप्टिक सर्जरी में, एसेप्टिक डिलीवरी में, एंडोटाइटिस मीडिया. देन ये लैब डायग्नोस्टिक्स, दैट इज स्पेसिमेन नेक्रोटिक डिब्री फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वुंड. उसके बाद ग्राम स्टेनिंग में ड्रमस्टिक अपीयरेंस, दैट इज टर्मिनल राउंड फोर्स, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई विद टर्मिनल राउंड फोर्स, दैट इज ड्रमस्टिक अपीयरेंस. अनरिलायबल क्योंकि ये टेटेनोस्पोरम, टेटनी एंड स्पेनॉइड्स तीनों में ग्राम स्टेनिंग में यही दिखता है. कल्चर, दैट इज रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, that turns black in color because of proteolysis by your Clostridium tetani, and polymyxin B agar which gives us swarming colonies. Blood agar with polymyxin B at 27 degrees Celsius incubated gives us swarming colonies. And that is mouse assay, that is toxigenicity test, that is toxin assay by in vitro mouse inoculated. Then clinical features क्या है? सबसे पहला इज योर ट्रिस्मस या लॉक जॉ दिखता है, which is the first symptom. Neonates में first symptom is that is they stop feeding, and इसमें ट्रिस्मस या लॉक जॉ. सेकेंड वीक में that is टेटनस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, देन टैकीकार्डिया, रीनल फेलियर, tracheal secretion increases, tachycardia occurs, tetanus symptoms also increase in the second week. Then complication trismus, रिसस सार्डोनिकस, that is ग्रिनिंग जैसा, स्माइली जैसे करते हैं, दांत ऐसे ग्राइंड करके ही करके वैसा इट इज सीन. तो सस्टेन स्पैजम, because of sustained spasm of facial muscle, that is some complication is your risus sardonicus. Then opisthotonus is your contraction of extensor muscles, and respiratory muscle spasm, which ultimately leads to your death. Immunization, that is tetanus toxoid, incubated with formalin. Tetanus toxoid which is incubated with formalin and absorbed in alum. Tetanus toxoid is formed how? That is by incubating it with formalin and absorbing by alum. Incubating it with formalin, absorbing by alum. In 6, 8 and 14 weeks पे pentavalent vaccine देते हैं. Pentavalent में tetanus आता है, that is 6, 8 and 14 weeks में. Then booster DPT 16, 24 months and 5 years में. Additional dose 10 years, 16 years में. Adults में if not given you can give 0.01 से ज़्यादा अगर होगा टाइटर, देन इट इज़ प्रोटेक्टेड. ओके, इम्यूनाइजेशन, टेटनस टॉक्सॉइड होता है वैक्सीन में. कैसे बनता है? दैट इज बाय इंक्यूबेटिंग विथ फॉर्मेलिन एंड देन एडिंग एलम टू इट. 6, 8, 14 वीक्स में. 6, 8, 14 वीक्स में पेंटावेलेंट वैक्सीन में टेटनस आता है. आफ्टर दैट DPT बूस्टर, दैट इज 16 to 24 months में एंड 5 years में. Then additional 10 years, 16 years you can give tetanus, and adults if not given you can give. Then poliomyelitis, that is basically poliovirus causes a neurological disease in which flaccid paralysis occurs because of infection, and your anterior horn of spinal cord is affected, causing flaccid paralysis in childhood, affecting central nervous system. Pathogenesis, that is poliovirus can be transmitted by your contaminated food and water, that is fecal-oral route, respiratory droplet and conjunctival contact. It multiplies locally, that is intestinal epithelial cell में, Peyer's patches में, submucosal cell में, tonsil में. So tonsil, intestinal epithelial cell, Peyer's patches and submucosal cell में. Then and submucosal lymphoid tissue में. Then CD155 receptor हमारे होस्ट में होता है जिससे वो बाइंड करता है, एंड इट स्प्रेड्स टू योर स्पाइनल कॉर्ड वाया योर हेमाटोजेनस स्प्रेड. हेमाटोजेनस स्प्रेड में इट स्प्रेड्स टू योर रीजनल लिम्फ नोड्स, मल्टीप्लाइज एंड देन इट स्पिल्स ओवर टू द ब्लड causing your primary viremia. So पहले प्राइमरी वायरेमिया होता है, उसके बाद इट मल्टीप्लाइज इन द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम एंड फिर से सेकेंडरी वायरेमिया करता है एंड CNS और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है. न्यूरल स्प्रेड डायरेक्टली वाया योर ग्लॉसोफैरेंजियल नर्व से. साइट ऑफ एक्शन इज मोटर नर्व एंडिंग. साइट ऑफ एक्शन मोटर नर्व एंडिंग होता है. सबसे पहले डीजनरेशन ऑफ नेसल्स ग्रैन्यूल्स होता है. इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स अंडरगो डीजनरेशन.
देन कम्स योर लैब डायग्नोस्टिक्स. इसमें अगेन स्पेसिमेन कलेक्शन आएगा. स्पेसिमेन कलेक्शन दैट इज थ्रोट स्वॉब्स जो कि 3 हफ्ते तक चलता है. रेक्टल स्वॉब्स अप टू 12 वीक्स एंड मोर देन दैट इज अप टू स्टूल सैंपल नॉट 12 वीक्स. एंड इम्यूनोडेफिशिएंट में लॉन्ग टर्म होता है. फिर सीवेज टेस्टिंग दैट इज अंडर योर पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम. सीवेज टेस्टिंग करते हैं. देन ये ट्रांसपोर्ट केप्ट फ्रोजन सेल लाइन दैट इज प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइन में ग्रो होता है. प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइन में ग्रो होता है. यू कैन आइडेंटिफाई इट बाय द हेल्प ऑफ योर PCR assay जो कि VPI रीजन को डिटेक्ट करता है. एंटीजन डिटेक्शन, एंटी सीरम या इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड साइटोपैथोजेनिक इफेक्ट्स. तो पहली बात तो प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइन में ग्रो करेंगे पोलियो को. साइटोपैथोजेनिक इफेक्ट्स होंगे मंकी किडनी में 3 to 6 days में, वो देखो. और एल्स ये your antigen detection by your immunofluorescence या anti-serum and PCR assay which detects your VPI region of poliovirus. Antibody detection neutralization test से that is detects your neutralizing antibodies. First response type specific होता है, subsequent वाला type specific नहीं होता. common to all 3 serotypes. Molecular RT-PCR again VPI region को detect करेगा, differentiate करेगा between wild and vaccine poliovirus. Clinical features that is 91 to 96% एसिम्टोमेटिक होता है. 91 to 96% पोलियो इज एसिम्टोमेटिक. 5% में सिम्टम्स होते हैं फीवर, मलेज एंड सोर थ्रोट. एंड 1% में देयर इज योर फ्लैसिड पैरालिसिस विच इज डिसेंडिंग टाइप ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस जो कि विच स्टार्ट्स एट द वेस्ट एंड गोज डाउन टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज. डिसेंडिंग टाइप ऑफ अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस. एंड ट्राइपॉड साइन बोलते हैं दैट इज हिप टू एक्सटर्नल. बाइफेजिक होता है स्पाइनल बल्बोस्पाइनल. Viral encephalitis, acute inflammation of the brain parenchyma. Acute inflammation of the brain parenchyma is basically called as your encephalitis. So viral encephalitis में there is Japanese encephalitis and here's herpes simplex virus causing encephalitis. So acute inflammation of your brain parenchyma is called as encephalitis, Japanese encephalitis, and your herpes simplex virus causing encephalitis. Encephalopathy, any disease of the brain which basically results in alteration of its function and structure. herpes simplex virus, HSV encephalitis and arbovirus का Japanese encephalitis. तो CSF एनालिसिस करेंगे दैट इज लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस दिखेगा, हाई प्रोटीन लो ग्लूकोज दिखेगा. herpes simplex वायरस दैट इज वायरल DNA से. एंड इसमें मैकलाइजा. जापानीज एंसेफेलाइटिस में IgM एंटीबॉडीज कैप्चरिंग मैकलाइजा. 2 स्टेप सैंडविच एलाइजा होता है. Then comes your rabies. What is rabies? Rabies is your ये rapidly progressive zoonotic, acute infectious zoonotic disease of your central nervous system, which that is, and in this disease once the symptoms appear, that is death is certain, almost certain, and it is almost certainly fatal. So pathogenesis. That is transmission कैसे होता है? Through bite of infected animals. So it can be dogs, cats, skunk, mongoose, bats. So जो rabbit होते हैं. Then non-bite exposure, licking of the wound, that is scratching after licking of the nails and paws. Inhalation of viral aerosol जो कि सिर्फ labs में होता है. And corneal या organ transplantation. Spread of virus पहले तो it will multiply locally. जहाँ पे bite हुआ होगा वहाँ पे it will multiply locally in the connective tissue at the site of inoculation in muscle या connective tissue. At the site of inoculation in muscle या connective tissue, then there will be entry into your peripheral neurons. Entry into peripheral neurons binds to nicotinic acetylcholine receptors at NM junction. Then multiplies locally at the site of inoculation in muscle or connective tissue. Then कहाँ जाएगा? peripheral neurons में acetylcholine receptor NM junction से bind करेगा. उसके बाद spread करेगा centripetally, that is retrograde axial transport via retrograde fast axial transport 250 mm per day में directly जाएगा brain and hippocampus में. That is गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, वहाँ से CNS में हिपोकैम्पस और ये सेरिबेलम में. उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड होगा, नीचे आएगा. दैट इज योर आई, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, हार्ट, पैनक्रियास एंड शेड्स योर इन एनिमल एंड ह्यूमन सलाइवा में. नेग्री बॉडीज आर योर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक eosinophilic inclusion bodies. Intracytoplasmic eosinophilic inclusion bodies which basically contain your rabies का protein and RNA. So they are negri bodies present in your hippocampus and cerebellum.
लैब डायग्नोस्टिक दैट इज स्पेसिमेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ले सकते हैं हम, सीरम ले सकते हैं, हेयर फॉलिकल्स फ्रॉम द नेक ऑफ द नेक एंड ये सलाइवा, उसका बायोप्सी एंड सलाइवा. सो एंटीजन डिटेक्शन लैब इसका मेन इज योर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट. इस रेबीज का मेन लैब डायग्नोस्टिक्स that is direct fluorescence antibody test या direct immunofluorescence. It uses your monoclonal antibodies which are tagged by fluorescent dye to detect the rabies antigen, rabies nucleoprotein antigen. Gold standard because of high sensitivity and specificity, and the best specimen is your ये hair follicles at the nape of the neck. Mouse inoculation, then baby hamster माउस न्यूरोब्लास्टोमा सेल एज वेल एज बेबी हैमस्टर किडनी सेल. इन दोनों सेल लाइन्स में दैट इज फास्टर डिटेक्टेड बाय डायरेक्ट IF. माउस इनोकुलेशन में दैट इज एंसेफेलाइटिस वगैरह होगा. ब्रेन एग्जामिन फॉर नेकली बॉडीज. देन एंटीबॉडी डिटेक्शन दैट इज एंटीबॉडी डिटेक्शन. CSF एंटीबॉडीज आर मोर सिग्निफिकेंट देन योर सीरम एंटीबॉडी. सीरम एंटीबॉडी हमें वैक्सीनेशन में भी आएगा क्योंकि CSF एंटीबॉडी सिर्फ डिजीज में ही आता है. देन देयर इज योर माउस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, fluorescent antibody viral, indirect immunofluorescence, rapid fluorescent. ये then RT-PCR ये एम्पलीफाई करेगा रेबीज के जीन ऑफ रेबीज वायरस. वायरल RT-PCR डिटेक्शन दैट इज RT-PCR के थ्रू एम्पलीफिकेशन से. पोस्टमार्टम डायग्नोसिस दैट इज कट सेक्शन ऑफ योर हिपोकैम्पस सेरिबेलम. तो नेगली बॉडीज मिलेंगी जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक inclusion eosinophilic inclusion bodies है with viral protein and RNA. Pyramidal neurons of hippocampus and Purkinje fibers of cerebellum. Peroxidase labeled antibodies. Neurocystic sarcosis caused by the larval stage of Taenia solium and ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस मसल में मस्कुलर सिस्टिक सर्कोसिस आई में ऑक्यूलर सिस्टिक सर्कोसिस होस्ट मैन ही होता है डेफिनेटिव एज वेल एज इंटरमीडिएट. इन्फेक्टिव स्टेज इसका एग्स होता है. ट्रांसमिशन दैट इज कंटामिनेटेड एग्स इन फूड एंड वाटर या फिर ऑटो इन्फेक्शन दैट इज दो हो सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल. दैट इज एक्सटर्नल ऑटो इन्फेक्शन इज कंटामिनेटेड फिंगर्स. इंटरनल ऑटो इन्फेक्शन इज जब प्रोग्लोटिड्स जो है वो दैट इज रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स व्हिच आर कॉज्ड बाय द ये ऑर्गेनिज्म in which proglotids throw the eggs back into the stomach. Proglotids throw the eggs back into the stomach. तो ह्यूमन साइकिल में क्या होता है, दैट इज फर्स्टली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एग रप्चर होगा, रिलीजेस एम्ब्रियो या ऑन्कोस्फियर जो कि पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइन से, दैट इज वेरियस ऑर्गन में जाएगा, आई ब्रेन वगैरह, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लार्वल स्टेज व्हिच इज सिस्टिक सर्कस सेलुलर से डिपॉजिट एज ए सिस्ट. 2 to 3 months लेगा मैच्योरेशन में, एंड आफ्टर दैट ब्रेन पैरेंकाइमा में भी जा सकता है या फिर एक्स्ट्रा पैरेंकाइमा दैट इज मेनिंजेस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, सब एराक्नोइड स्पेस हर जगह जा सकता है. सिस्टिक सर्कस सेलुलर से दैट इज स्कोलेक्स होता है, दैट इज स्कोलेक्स ओवल, स्लाइटली ओवल, येलोइश वाइट, ऐसा स्कोलेक्स होता है आउटर सैक लाइक, और बीच में ऐसा क्लियर फ्लूइड होता है. एंड लार्जर लॉब्यूलेटेड वाले को रैसेमोस सिस्टिक सर्काई बोलेंगे. लैब डायग्नोस्टिक दैट इज मेन इज योर रेडियो डायग्नोसिस दैट इज MRI एंड CT स्कैन. तो CT स्कैन में कैल्सिफाइड सेल्स दिखते हैं, MRI में एंड बेसिकली क्या होगा, डिटेक्ट द नंबर ऑफ सिस्टिक सर्काई, द साइज, द स्टेज, एक्टिव या डॉर्मेंट, एवरीथिंग, लोकेशन. इसमें हमें क्या क्या दिखेंगे, वेसिकुलर, नेक्रोटिक, नॉन सिस्टिक लीजन सारे दिखेंगे. दैट इज इन्फ्लेमेटरी, एक्स्ट्रा पैरेंकाइमल सिस्ट दिखेंगे, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, वेसिकुलर, नेक्रोटिक चेंजेस एंड नॉन सिस्टिक लीजन सब दिखेंगे. एंटीबॉडी डिटेक्शन cheaper than MRI CT but cannot differentiate between active and past infection. ELISA that is extract of cystic cerci, crude extract of cystic cerci, western blot, enzyme immune transfer blot, EITB जिसमें glycoprotein antigen that is glycoprotein bands 1 to 7 यूज होता है. And antigen detection, ELISA that is using your monoclonal antibody. Fine needle aspiration cytology that is ये क्या as well as fundoscopy, आई में देख लीजिए.